Yes, let us start with the numericals from thermal external properties of matter. Okay, I hope you can see the screen. Yes. Okay, so this is the last numerical we have just seen last time. See the next. That is seventh numerical. Just read it carefully. Blacksmith fixes iron ring on the rim of a wooden wheel of a bullock cart. Okay, so matlab there is a bullock cart and a iron ring has to be fixed on the wooden wheel. Okay, तो ऑब्वियसली देखो क्या है ना कि ये इसका एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ कि हाउ द बुलक कार्ट हाउ द व्हील इज फिक्स्ड ऑन द बुलक कार्ट wheel. So suppose this is the wheel, okay, and iron wheel जो है या iron ring जो है ring, तो वो it is in the form of a hollow ring like this. तो ये इस तरह से होता है. अभी देखो सीधी बात है कि अगर ये दोनों सेम साइज के अगर होंगे तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर दोनों सेम साइज के हैं तो ऐसे केस में फिर वो लूज बैठ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, लूजली बैठेगा. तो इसलिए क्या करते हैं कि हमेशा ये जो वुडन व्हील जो है उसका साइज थोड़ा ज्यादा होता है और ये जो रिंग है रिंग का रेडियस या उसका साइज थोड़ा कम होता है, ठीक है. तो और उसके बाद क्या करते हैं कि इस रिंग को हीट करते हैं. देखो व्हेन दिस रिंग इज हीटेड अप, so what happens is due to the heating the ring will just expand, it will just expand slightly and it just becomes exact same as the radius of this wheel here. इस व्हील के रेडियस के बराबर ये रिंग का रेडियस बन जाता है हीट करने के बाद. ओके, और जैसे ही उसका रेडियस सेम बनता है या तो उसके बाद फिर उसको थोड़ा ठोक ठोक के उसके ऊपर चारों तरफ से उसको बिठाया जाता है, ठीक है. जैसे ही वो उसके ऊपर फिट हो जाता है उसके बाद फिर उसको फिर से कूल कर दिया जाता है, ठीक है, so that it will just get contracted once again and just take the original previous shape, ठीक है. So because of that it just binds together all the different parts in the wheel. तो ये जो वुडन व्हील के अंदर जो पार्ट्स है तो वो उसको जकड़ के रखता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन. तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इस तरह से जकड़ के रखता है उसको. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एक बार ठीक से पढ़ेंगे फिर से. देखो blacksmith fixes iron ring on the rim of a wooden wheel of a bullock cart. तो ये जो है this is the wooden wheel of this bullock cart. Okay, yes, and what is this here? It is the iron ring. ये iron का बना हुआ ring है. Okay, ये ring है और ये wooden wheel है, ठीक है. Now the diameter of wooden rim and the iron ring are, okay, तो diameter दिया हुआ है. ये जो है वो wooden wheel का diameter है. You can just call it as capital D, which is actually given to be 1.5 meter. Okay, this is the diameter of wooden wheel. And at the same time ring का जो diameter है वो थोड़ा कम है, देख सकते हो ठीक से. So we can just express it as small d, which will be actually the 1.47 meter. ओके, तो मतलब वो 3 मिलीमीटर से उसका डायमीटर कम है, ठीक है. Now at room temperature 27 degrees Celsius. Okay, to what temperature the iron ring should be heated so that it can just fit on the rim of the wheel? Okay, that means what we want is we want to find out at what temperature this iron ring has to be heated up so that its diameter will become exactly same as the diameter of this wooden wheel. Because unless and until its diameters become same, this ring cannot get fit into the on this wheel here, ठीक है. तो इस wheel के ऊपर fit होने के लिए
इन दोनों का डायमीटर सेम होना जरूरी है. दैट मीन्स we have to heat this iron ring to such a temperature that its diameter will actually become 1.5 meter after heating at that temperature. तो अभी इसमें देखो, अगर इस रिंग को अगर खोल दो, मतलब ये रिंग को अगर एक पॉइंट पे कट करके अगर ओपन कर दो, तो इट विल बिकम जस्ट लाइक अ रॉड. यू कैन जस्ट सी हियर, दिस विल बी द रॉड which this ring is formed from. Okay, मतलब एक जस्ट लाइक अ रिबन के जैसा ही बन जाएगा वो. This is going to be a ribbon, okay, which is obtained when we expand this ring here. तो इस रिंग को अगर हम एक्सपांड कर देंगे तो उसके ये रिबन मिल जाएगा इस तरह से. अभी एक बात समझ सकते हो, इस रिबन का जो सर्कमफरेंस है, मतलब रिबन का जो लेंथ है, वो कितना होगा एक्चुअली, सेम एज द सर्कमफरेंस ऑफ दिस आयरन रिंग हियर, जो कि अभी यहाँ पे डायमीटर तो दिया है. वेरी गुड, राइट राइट, करेक्ट, वेरी गुड अथर. सो द लेंथ ऑफ दैट रॉड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द सर्कमफरेंस. और अभी हमको पता है ऑलरेडी कि सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई r. बट यहाँ पे रेडियस तो हमको पता नहीं है. just take it as 2r can be supposed to be the diameter. Okay, so इस 2r को अगर हम diameter बोल देंगे तो circumference can be written as pi into d. correct है? That means pi into diameter. This will be the formula for circumference. Okay, so therefore we can just say that the length of the rod here before heating will actually be pi into d. Okay, we can call it as L naught. Okay, इसको हमको L naught बोलना होगा. ठीक है, but when it is heated up, जब उसको हम हीट करेंगे तो उसका लेंथ थोड़ा बढ़ेगा. राइट है? सो जैसे ही उसका लेंथ बढ़ेगा तो उसका जो इंक्रीमेंट है, ये सपोज उसका लेंथ थोड़ा बढ़ गया इस तरह से. ठीक है, दिस इज द इंक्रीमेंट. वी कैन कॉल इट एज डेल्टा एल. ओके, सो दिस इज द डेल्टा एल, that is the increment in the length. And what we want is what this increment should be. तो ये जो increment है वो ऐसा होना चाहिए कि जो final length of the rod should be the circumference of this wheel here. इस wheel का जो circumference है उसके बराबर वो होना चाहिए. तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ये L नॉट तो हमको मिल रहा है पाई डी के बराबर अभी. और ये हम देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द रॉड एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस वी कैन से. ठीक है, जो मतलब लो टेम्परेचर पे जो उसका लेंथ है तो वो हमको मिल रहा है पाई इंटू डी, विच इज डिनोटेड बाय एल नॉट. Okay, now we just talk about the length of the rod at the high temperature, which is to be found out actually. So we can just say the length of the rod at T degree Celsius temperature. How much it must be? So it should be actually equal to pi into capital D. ये समझ सकते हो ठीक से, क्योंकि capital D जो है, this is going to be the diameter of the wheel actually, which is greater than this small d, and we have to make this ring fit on this wheel, wooden wheel. तो उसके लिए रिंग का जो डायमीटर है तो वो इसके व्हील के डायमीटर के बराबर बनना जरूरी है. और वो तभी होगा जब इस circumference of this rod will become exactly equal to pi into capital D, where capital D is the expected diameter, which will be at the high temperature here. So we can just denote this by LT here. LT मतलब the length of the rod at the high temperature. Yes, and now we can just make use of the formula which already we have, that LT अल्फा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास. देखो, क्योंकि यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, लीनियर, तो लीनियर एक्सपेंशन होने की वजह से यहाँ पे अल्फा विल बी सिग्निफिकेंट, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर आयरन. आयरन इज गोइंग टू एक्सपांड हियर, एंड दैट्स व्हाई we can use the formula for linear expansion of iron, which tells us simply that alpha is actually equal to, देखो, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल लेंथ at initial temperature into change in temperature actually here, so that we can just rearrange this formula and get it as delta L is equal to, okay, but we want to find out the change in temperature here, right? So just take this change in temperature in that side, and that will be actually equal to delta L upon
L naught, which is the initial temperature, into अल्फा. ओके, ये फॉर्मूला हमने सिर्फ रीअरेंज किया. ठीक है, अभी डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर टी माइनस initial temperature, which is actually 27 degrees Celsius. Okay, this is actually going to be the change in temperature here. Okay, and that is going to be actually equal to delta L, which stands for the final length at T degrees Celsius minus initial length at room temperature, which is L naught here, upon L naught kept as it is into alpha also as it is. Okay, so this T minus 27 is just kept as it is, and here in this side we can just put all the values of this LT as well as L naught here. We already know that this LT is going to be pi into capital D, where L naught is going to be pi into small d. Okay, so that this will be pi into capital D minus pi into small d, and that is to be divided by pi into small d once again, and that is multiplied with alpha, which is as it is. And then we can be able to solve this so as to get this as T minus 27, which is going to be equal to, here we can just take pi common from this numerator as well as in denominator also. Denominator with already pi present hai hi as a factor, but in the numerator we can just express it as pi into capital D minus small d, and that is going to be divided by pi into small d into alpha. Okay, so that this pi will just get cancelled, and we are left with T minus 27 is equal to, here it is capital D, which is already 1.5 here, so just put it as it is, and small d, which is already 1.47 here, just take it as it is, 1.47, and then just divide this whole thing by 1.47 once again, and this alpha is to be put here as it is, that is 1.2 into 10 raised to minus 5. Okay, so if you just work this out, just don't worry about the units, all of them are standard one. ठीक है, तो ये सभी यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड है. अब यहाँ पे 1.5 को हम 1.50 लिख सकते हैं, एंड 1.50 में से 1.47 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसमें हमको मिलेगा 0.03. ओके, 0.03, and that is to be divided by this 1.47 as it is into 1.2 kept as it is. This 10 raised to minus 5 can be transferred there in the numerator so as to get it as 10 raised to plus 5 here, and then we can just be able to solve this further. तो इस 10 raised to 5 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, पॉइंट जो है वो 5 डेसिमल डिजिट्स आगे जाएगा, राइट. तो अगर 5 डेसिमल पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर दो उसको, तो वो बन जाएगा एक्चुअली 3 एक्स्ट्रा 0, मतलब 3000 बन जाएंगे वो एक्चुअली. ठीक है ना, तो 3000 will be there in the numerator. Yes, so here it will be 3000, and that is to be divided by 1.47 into 1.2. Okay, let us write it in the next column here. Okay, so we can get it as T minus 27 is going to be equal to 3000 upon 1.47 into 1.2. Okay, अभी इसमें एक बात कर सकते हो, 1.47 मतलब approximately 1.5 ही हो गया, but just don't approximate it. Let us try it with the help of the calculator only. तो अगर कैलकुलेटर, या अभी चलो तुम्हारे पास लॉग टेबल होना चाहिए उसके लिए, using log table you have to work it out. So 1.47 multiplied with 1.2, it comes out to be 1.764. Okay, let work it out as 3000. Yes, so it will be 3000 upon 1.764. Okay, so 1.764, and if we just use the log table and just work it out, तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि 3000 को हमको डिवाइड करना है 1.768 को 764 को. Yes, it actually to be 1700. Okay, 0.68.
just forget about it. 1700 is sufficient. So almost 1700.68 or 0.7 we can just round it up. So 1700 देखो ये 1700.7 will actually be the ratio of these two. But don't forget here that this ratio is actually t minus 27. Okay, तो अगर t minus 27 का वैल्यू अगर इतना है तो t का वैल्यू फिर कितना होना चाहिए? It should be equal to 1700.7 plus 27, which actually comes out to be 1727. So 1727.7 degrees Celsius, which should be the correct answer here. Okay, so in this way we can just get the final answer here. देखो इसके लिए एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ. देखो और ये शॉर्ट ट्रिक जो है उसका रीजन भी मैं बताता हूँ. देखो जो लीनियर क्वांटिटी है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि डायमीटर इज अ लीनियर क्वांटिटी, राइट. तो इसका जो डायमीटर है वो हमको दिया हुआ है और इसका जो डायमीटर है वो भी हमको दिया हुआ है. तो डायमीटर्स के ऊपर अगर हम अल्फा वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे ना तभी भी हमको सेम ही आंसर मिल जाएगा. डायमीटर्स के ऊपर, डायरेक्ट डायमीटर के ऊपर हमको ये यूज करना है. देखो जैसा कि अभी हमने इसमें तो चलो सर्कमफरेंस के लिए यूज किया, बट दैट इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली. वी कैन जस्ट यूज इट फॉर डायमीटर्स डायरेक्टली. तो डायमीटर के बारे में अगर यूज करेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा कैन बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर. दैट्स इट. तो इससे हमको क्या मिलेगा? देखो चेंज इन टेम्परेचर विल एक्चुअली बी इक्वल टू द चेंज इन डायमीटर upon original diameter into alpha, where change in diameter is already we have calculated it as 1.50 minus 1.47, which is going to be 0.03, and that is to be divided by the original diameter, which is actually going to be 1.47 here, and that is multiplied by 1.2, and 10 raised to minus 5 goes up and becomes 10 raised to plus 5 here. And if we just work it out of approximately, then we can just write it as 3000 upon इस 1.47 को approximately हम 1.5 लिख सकते हैं, बराबर. and this 1.5 if you just put it as it is here, then 1.5 into 1.2, so अब यहाँ पे 1.5 का डबल ही होता है 3, ये तो पता है तुमको. तो 1.5 का डबल कर दिया 2, तो और ये 2000 as it is बचेगा. और 2000 को अगर हम 1.2 से डिवाइड करते हैं, that means it is equivalent to divide this 20,000 by 12. That means it will be actually 5,000 upon 3, which should actually become 1600 and something, which is very close to this. But अब चलो यहाँ पे approximation हमने किया है already. अगर ये MCQs में अगर पूछा जाता है तो उस केस में हमको ये approximation चल जाएगा, क्योंकि हमको MCQs के अंदर जो है accurate आंसर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ऑप्शन हमारे सामने है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे MCQs के अंदर ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हैं आराम से. तो हमेशा याद रखो, चाहे वो रिंग हो या चाहे डिस्क हो या चाहे वो स्पीयर भी क्यों ना हो. स्पीयर के बारे में भी ये देखो, अगर सपोज कोई स्पीयर है, उसका रेडियस सपोज r दिया हुआ है, और अगर उसका अल्फा तुमको दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, और अगर उसको हमने हीट किया, हीट करने की वजह से उसका जो रेडियस है वो सपोज एक्सपांड हो गया और उसका रेडियस का डेल्टा r इतना उसमें एक्सपेंशन हो गया रेडियस के अंदर. So we can just use the formula that alpha is equal to change in radius delta r upon original radius into change in temperature. That's all. So this is the formula for alpha. भले ये स्पीयर जो है वो बल्क बॉडी है, वॉल्यूम वाला बॉडी है, नो डाउट. वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यहाँ पे काम करेगा ही. गैमा इज इक्वल टू क्या होगा? गैमा विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इनटू चेंज इन टेम्परेचर. ये तो नो डाउट, ये तो ट्रू है ही, नो डाउट. लेकिन at the same time, even if this sphere is a three-dimensional object, but still we can just see this radius of this sphere will follow the same relationship which is followed by the rod, a linear rod actually. Even अगर इस ये स्पीयर का सरफेस एरिया को अगर हम कंसिडर करते हैं, सरफेस एरिया वो अगर सपोज हम कंसिडर करते हैं ए है, ओके, और वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका सरफेस एरिया ए है, और सपोज इट चेंजेस बाय डेल्टा ए व्हेन इट इज एक्सपांडेड, व्हेन इट इज हीटेड अप विद द टेम्परेचर डेल्टा टी. In that case we can just say that the
the coefficient of superficial expansion, that means beta, can actually be used here, and we can just express it as delta A upon A into delta T here. That means ये जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है, बीटा का फॉर्मूला जो है, वो हम इसके सरफेस एरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम. So we can just use this formula for beta for the surface area of this sphere, even if this sphere itself is a three-dimensional object and it has a volume only. ठीक है, वॉल्यूम उसके अंदर है, लेकिन उसका जो सरफेस एरिया है, तो उसमें चेंज निकालने के लिए हम बीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. उसके रेडियस के अंदर का चेंज निकालने के लिए हम अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वॉल्यूम के अंदर चेंज निकालने के लिए तुमको ऑलरेडी पता है कि गैमा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आराम से, नो डाउट. सो इससे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, तो वो हमको समझ में आई यहाँ पे. और दिस इज ट्रू फॉर एनी शेप, ऑल द शेप्स. ठीक है ना. तो स्पीयर सिर्फ स्पीयर ही होगा ऐसा नहीं, अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर के केस में भी हम वही कर सकते हैं आराम से. ठीक है, इट्स सरफेस एरिया विल satisfy this relationship, its radius or height will just satisfy this relationship, alpha वाला relationship, और उसका वॉल्यूम जो है, this volume will just satisfy this relationship, no doubt. So in this way, this is a important concept which will be used in the MCQs, remember. Let us do the next question. Yes. Okay, so 8th question, we can just read it carefully. In a random temperature scale x, okay, there is a random temperature scale x, water boils at 200 degree x and freezes at 20 degree x. Find the boiling point of liquid in this scale if it boils at 62 degree Celsius. तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल सेल्सियस टेम्परेचर जो है, वो सेल्सियस स्केल पे 62 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होने वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उस अननोन स्केल पे कितना होगा, तो वो हमको ढूंढ के निकालना है. देखो, लेट अस सी दिस टू स्केल्स हियर. वन इज द सेल्सियस स्केल and other one is the random scale. ओके, तो ऑलरेडी हमने ये इसका जो सॉल्व करने का जो टेक्निक है, वो ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया था, आपको याद होगा शायद. देखो, सपोज दिस इज अ रैंडम स्केल एंड दिस इज सपोज अ सेल्सियस स्केल. ओके, तो यहाँ पे रैंडम स्केल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री सेल्सियस डिग्री एक्स दिया हुआ है, तो मतलब इसका जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो 200 है. ठीक है, और एट द सेम टाइम वाटर फ्रीजेस एट 20 डिग्री एक्स, तो ये हमको दिया हुआ है. ये वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ पे 20 दिया हुआ है. बट ऑलरेडी वी नो दैट इन सेल्सियस स्केल water actually freezes at 0 degree Celsius, right? And at the same time, water boils at 100 degree Celsius. Okay. तो अभी हमको एक फॉर्मूला यूज करना है. अगर सेल्सियस टेम्परेचर को अगर हम C से डिनोट कर देंगे, और रैंडम टेम्परेचर को अगर हम ये X से डिनोट कर देंगे, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला बना सकेंगे आराम से कि X माइनस ओरिजिन, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर पॉइंट है वो है 20. ओके, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हियर. टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, हाउ मेनी दे आर? सो इफ यू जस्ट सी केयरफुली, देन 20 और 200, इनके बीच में कितने डिविजन्स आ जाते हैं? तो वो 180 डिविजन्स एक्चुअली आ जाते हैं. तो इसलिए यहाँ पे हमको इसको 180 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो इसलिए यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 180. ओके, और इस तरफ फिर ये C जो है वो C आएगा, नो डाउट, माइनस इसका जो इनिशियल ओरिजिनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है वो 0 ही है, तो नो प्रॉब्लम अबाउट इट. एंड दिस द होल डिफरेंस is divided into 100 equal parts, and that's why it will be here 100 as it is in this way. And then we can just be able to solve this further. And अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो ठीक से, हमको C दिया हुआ है, ये सेल्सियस टेम्परेचर है, और उसको हमको कन्वर्ट करना है न्यू स्केल के अंदर, अननोन स्केल के टेम्परेचर में, तो मतलब x में कन्वर्ट करना है. तो वी हैव टू एक्सप्रेस दिस x in terms of C here. So let us try to do that. Just transfer this 180 in that side first of all, so that we get this x minus 20 here left in the left side. That should be equal to 180 times C upon 100, correct hai? And then we can be able to cancel out this 0, as well as this 18 and 10 can be reduced by 2, so that we get this 2 9s are 18, and here it is 2 5s are
10. Okay, so we can just have that x minus 20 is actually equal to 9 by 5 times of C, and just transfer this 20 also in that side, so that x is left behind in this LHS here. So x becomes actually equal to 20 plus 5 by 9 times of C. That's it. And then we can be able to put this value of C here as 62 degrees Celsius, which is already given here. And we have to calculate this x now. तो उसके लिए यहाँ पे C equal to 62 डाल दो यहाँ पे, so that x found out to be equal to, देखो 20 plus 5 by 9 times of 62 here. If you just try to solve this, then we can just get it as x is equal to 20 plus, अब देखो 62 into 5 कितना बनता है, तो उनको पता है already, it becomes 310. Okay, so 310, that is to be divided by 9, and if you just cross multiply it here, then we can just be able to get this as 29s are 180 plus 310, and that is to be divided by 9 as it is, so that we can just get this as, अब देखो 180 plus 310 कितना होता है, 490, करेक्ट है? Yes, 490. Okay, 490, that is divided by 9. So 9 ones are 9 5s are 45, and 4 carry 40 हो गया, तो 9 6 are 36, 4 बचा 40 हो गया, 6 7 recurring. So x will actually be 56.67 degree x. Check. नाइन बाय फाइव, हाँ तो 9/5 है, 5/9 कहाँ से आ गया? यस, चलो ठीक है. Okay, so it should be 9/5 times of C. Yes, if you just put this C equal to 62, then we can just get x as 20 plus 9/5 times of C, and then we can just cross multiply it here, so that we can just get it in the next step. That is, yes, so 5 into 20 कितना बनेगा? 100. Okay, so this is 100 plus 9 into 62 कितना बनता है? तो देखो 9 2s are 18, and here it is 1 carry, and 9 6s are 54 plus 1 55. Okay, and that is again to be divided by 5. और जस्ट यहाँ पे इसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर देंगे तो भी चल जाएगा, इट विल बी बेटर एक्चुअली, बट चलो ठीक है, अभी कर दिया है. तो इट विल बी 658 divided by 5, which actually happens to be 5 ones are 1 carry 15 हो गया, तो 5 3s are, and again 5 ones are 0.3 बचा 30 हो गया, 5 6s are. This actually will be the correct answer, and that will be in degrees x. Okay, चलो ठीक है. So this is all about the first 8th question here. Let us try to solve this 9th question here itself. A gas at 900 degrees Celsius is cooled until both its pressure and volume are halved. Calculate its final temperature. Okay,
So see here, its initial temperature is already given, that is 900 degrees Celsius. Okay, so don't forget to convert it into Kelvin. Okay, तो ये क्योंकि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन में यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब ये दिया हुआ है कि प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम आर हाफ। तो अब देखो प्रेशर हाथ आधा हो गया, वॉल्यूम भी आधा हो गया, तो टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर हमको निकाल के दिखाना है। अभी देखो जब भी किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो वो हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करता है, ठीक है। सो ये वी कैन से दैट if suppose the initial pressure of the gas is denoted by P1 and initial volume is denoted by V1 and initial temperature is denoted by T1, then we can, and if suppose the final temperature, pressure and volume are denoted by P1, V1 and T1 respectively, then we can just get this as P1 V1 is going to be equal to NR into T1. This is the equation number 1, we can say. And in the same way, here the second equation can also be obtained by using this P2 V2 and T2 here. That is P2 V2 is equal to NR into T2 here, which can be given as equation number 2 here. But यहाँ पे जबकि हमको number of moles भी नहीं दिया है और ideal gas constant भी नहीं दिया हुआ है, so it will be better to divide these two equations so that we can just get rid of this NR here. तो ये NR cancel हो जाएगा अगर हम इन दोनों equations को divide करेंगे तो देखो यहाँ पे if we just divide the equation 1 by 2, then we can just be able to get this P1 V1 upon P2 V2, which is going to be equal to NR T1 upon NR T2. Okay, so that this NR here gets cancelled, and what we are left with is simply P1 V1. Yes, P1 V1 upon P2 V2 must be equal to T1 upon T2. Okay, but again, don't forget here that it is given that the pressure is halved. That what does it mean? Pressure is halved means final pressure, that means P2 is actually half of the initial pressure, right? And volume is halved. What does it mean again? That the final volume is actually half of the original volume, that means initial volume here. So अगर ये बात हम यूज करेंगे, अच्छा इसमें से हम P1 upon P2 का रेशियो निकाल सकते हैं आराम से, देखो because we want it here. यहाँ पे P1 upon P2 यहाँ पे दिख रहा है और V1 upon V2 भी दिख रहा है, तो P1 upon P2 as well as V1 upon V2 can be found out from this, and can we get it as 2 is actually going to be equal to P1 upon P2 from here. Okay, and similarly 2 can be written to be simply V1 upon V2 also. तो यहाँ पे P1 upon P2 के बदले अगर 2 डाल देंगे और V1 upon V2 के बदले भी 2 डाल देंगे तो 2 into 2 4 बन जाएगा, और यहाँ पे T1 upon T2 we don't know, so T1 upon T2 is going to be 2 into 2 मतलब 4 हो गया ये, जिससे हमको मिलता है कि अगर ये 4 is equal to T1 upon T2 है, ओके, तो इसको थोड़ा शफल करके हम ये बोल सकते हैं कि T2 must be actually equal to T1 upon 4. Okay, but what is T1 here? If you just see carefully in the question, then T1 is actually given to be 900 degrees Celsius. Okay, but just again calculate it in Kelvin actually. So T1 is actually going to be 900 degrees Celsius, but डिग्री सेल्सियस कोई काम का नहीं है, वो हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और we already know that degree Celsius can be converted into Kelvin by adding 273 in it. Okay, so that we can just get this T1 to be simply equal to 900 plus 273, मतलब ये बन गया actually 1127. Okay, yes, sorry, 1173 Kelvin. Okay, and then we can be able to solve or put this value of T1 here, so that we can get this T2 to be simply equal to 1173 divided by 4, which happens to be actually 4 ones are and 4 twos are 8, 3 बचा 37 हो गया, तो 4 nines are 36, 1 बचा 13 हो गया, 4 threes are 12, 1 बचा 10 हो गया, तो 4 twos are 8 and 2 बचा 20 हो गया, so 2 fives are
20. Okay, so it comes out to be actually 293.25, but that is again in Kelvin. If you want to convert it into Celsius, then subtract 273 from it, and just we can expect it as 20.25 degrees Celsius. Okay, but let us check answer whether it is given in Kelvin or Celsius. Yes, it is given already in Kelvin. So we can just mark it as a correct option. That is 293.29 Kelvin. It's okay. एक point decimal point का सिर्फ difference है. इतना तो हो सकता है. ठीक है. So this is about the 9th question here. Let us see the next question. Yes, just read this carefully. An aluminum rod and iron rod show 1.5 meter difference in their lengths when heated at all temperatures. Okay, underline this word, all temperatures. Okay, कोई भी टेम्परेचर पे अगर देखते हो तो उनके लेंथ में जो डिफरेंस है तो वो 1.5 मीटर का है, ये दिया हुआ है. ओके, what are their lengths at 0 degree Celsius temperature? If the coefficient of linear expansion of aluminum is given and coefficient of linear expansion of iron is already given. Okay, so देखो एक बात यहाँ पे कि एल्यूमिनियम का जो लेंथ है, suppose we consider the two rods, one is made up of aluminum. Suppose this is the aluminum rod, and suppose this one is a hello. हाँ. Okay, so this is this is a copper aluminum rod, and the second one is the copper rod. Sorry, iron rod. ठीक है. So yes, this one is going to be aluminum rod, and here this is going to be the iron. ठीक है. अभी इसमें इनके दोनों का जो ओरिजिनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ, वी कैन सी वी कैन जस्ट डिनोट इट बाय एल्यूमिनियम को हम 1 नाम दे देंगे और आयरन को 2 नाम दे देंगे, चलेगा. तो इसको हम बोलेंगे, उसका ओरिजिनल लेंथ जो है उसको हम बोल देंगे L0. ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, और आयरन का जो रॉड है तो उसका जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हम बोल देंगे L0 डैश. ओके, ठीक है. तो अभी अगर से इसको हमने अगर हीट किया, सपोज एल्यूमिनियम रॉड को अगर हमने हीट किया तो उसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ एक्सपांशन होगा जरूर. वी कैन जस्ट से दैट द लेंथ ऑफ दिस एल्यूमिनियम रॉड विल जस्ट गेट इंक्रीज्ड बाय सम amount after increasing the temperature. Suppose its length becomes LT at this temperature, at T degree Celsius temperature, and similarly, if iron rod is heated up, then its length also will increase, and its final length will actually become LT dash. Okay, dash मतलब iron और no dash means aluminium. Okay, तो ये हमको समझना है. तो अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पे गिवन कंडीशन जो है वो हमको अप्लाई करना पड़ेगा इधर. यस, दिस इज L0 and LT and L0 dash LT dash. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे कि according to the given condition, it tells us that the aluminum rod and iron rod shows 1.5 meter difference at their lengths when heated at all the temperatures. All temperatures यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें 0 डिग्री सेल्सियस भी तो आ जाता है. इसका मतलब L0 और LT इन दोनों की L0 और L0 डैश इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 1.5 का. ठीक है, 1.5 मीटर का, नो डाउट. और लेकिन अभी इसमें हमको ये पता नहीं है कि किसका लेंथ ज्यादा है और किसका कम है. ठीक है, बट वी कैन जस्ट गेस फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ अल्फा हियर दैट दिस alpha of this aluminum is more
and the alpha of this iron is less. So we can just conclude that L naught will be greater than L naught dash. So we can just say that L naught minus L naught dash is actually going to be 1.5, ठीक है, मीटर. यस, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे उनके लेंथ में डिफरेंस 1.5 मीटर का होगा. नॉट ओनली दैट, बट इट इज सेड एट ऑल टेम्परेचर्स, राइट, सभी टेम्परेचर्स पे बोला है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो T डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया हमने, उसके बाद एल्यूमिनियम रॉड का लेंथ कितना बन गया, LT बन गया, और आयरन रॉड का लेंथ कितना बन गया, LT डैश बन गया. तो LT और LT डैश इन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस है तो वो भी उतना ही होगा, 1.5 मीटर, क्योंकि ऑल टेम्परेचर्स बोला है ना उन्होंने, इसलिए. तो इसलिए यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं कि LT minus LT dash will also be the same thing, that is 1.5. okay, this is 1.5 here. yes, but here LT and L naught इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वो हमको ऑलरेडी पता है कि कोई भी सब्सटेंस को जब हीट किया जाता है तो उस केस में उसका जो लीनियर एक्सपेंशन है वो हमेशा ये सेटिस्फाई करता है कि उसका जो फाइनल लेंथ और मतलब इंक्रीज इन लेंथ जो है, मतलब LT minus L naught of this aluminum rod will actually be alpha into L naught into delta T, correct है, where delta T is going to be the change in temperature here. This is for aluminum. okay, ये हमने एल्यूमिनियम के लिए कंस्ट्रक्ट किया इक्वेशन. अगर हम वही इक्वेशन अगर आयरन के लिए अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या कैसे मिलेगा, देखो आयरन का फाइनल लेंथ कितना है, ये देखो यहाँ पे LT डैश है, बराबर, और उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, L नॉट डैश है, और उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है तो वो कितना हमको एज्यूम करना है, लेट अस एज्यूम इट एज अल्फा डैश. ओके, वेयर अल्फा स्टैंड्स फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम हियर. So we can just write this for iron, that the LT dash minus L naught dash is actually going to be alpha dash into L naught dash into delta T. okay, तो ये हमारा second equation बन गया. So give this as equation number 1 and this as equation number 2. But unless and until we subtract these two equations, we cannot use these conditions here. ये जो कंडीशंस यहाँ पे हमको मिल रहे हैं L naught minus L naught dash, तो ये यूज करना तभी पॉसिबल होगा जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ही सबट्रैक्ट करेंगे. सो लेट अस सबट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस. सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो अगर 1 माइनस 2 कर देंगे तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, इधर ये जो टर्म है इसमें से ये वाला टर्म सबट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, सो वी कैन जस्ट राइट इट एज इट इज here in the bracket. So we can just get it LT minus L naught minus LT dash minus L naught dash. okay, which must be equal to, अभी ये वाला जो टर्म है इसमें से भी ये वाला टर्म एज इट इज सबट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हमको मिलेगा अल्फा L naught डेल्टा T माइनस अल्फा डैश L naught dash into delta T. okay, so that if we just solve this further then we can just be able to get this as, अब देखो इसको ये ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे ना तो हमको मिलेगा LT minus L naught minus L naught LT dash, minus of minus becomes plus, and here it becomes L naught dash, and that is going to be actually equal to, we can just take a delta T common from this and get alpha L naught minus alpha dash L naught dash as it is, and that is multiplied by delta T as it is. So here LT minus LT dash can be combined in one bracket. okay, तो ये ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे LT minus LT dash. okay, and ये L naught और ये L naught dash इनको भी हमको एक ब्रैकेट में कंबाइन करना है, but you can just take minus sign common and express it as minus of L naught minus L naught dash. okay, and that is actually going to be alpha L naught minus alpha dash L naught dash, which is into delta T. okay, but here as we can see from this, L naught minus L naught dash is going to be 1.5, so we can just replace this as 1.5 here. yes, and यहाँ पे LT minus
LT dash is also going to be 1.5. So here it is present here, LT minus LT dash, right? So you can just express it as 1.5 again. Okay. तो अगर ये भी 1.5 अगर एक्सप्रेस कर दिया इसको, तो and that is going to be equal to alpha L naught minus alpha dash L naught dash, and that is multiplied with delta T as it is. But here we can just see that this 1.5 just get cancelled. Okay, and we are left with 0 here in this side, which is going to be equal to this alpha L naught minus alpha dash L naught dash. Okay, and that is multiplied by 10 delta T, and delta T can be transferred to the denominator in this other side, so as to get this simplified as simply alpha into L naught minus alpha dash into L naught dash is actually going to be 0, which gives in the next step that अभी इसमें हमको निकालना क्या है, what are your lengths at 0 degree Celsius. Okay, alpha and alpha dash is already given. Yes, so we can just put the values of, or we can just express this in terms of the ratio. अगर इसको हम रेशियो के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करेंगे ना, तो it will be better. First of all, let us just, I hope you can see this. Okay, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस करेंगे इसको L naught alpha L naught is equal to alpha dash into L naught dash. Okay, जिसको सिंप्लीफाई करके हम L naught अपॉन L naught dash को देखो अल्फा डैश अपॉन अल्फा ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, so that in the next step we can just get it as L naught upon L naught dash is actually going to be अल्फा डैश अपॉन अल्फा. अभी अल्फा डैश कितना है, अल्फा डैश मतलब आयरन का कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 11.9 into 10 raised to minus 6. Okay, so here it is 11.9 into 10 raised to minus 6, and L naught अल्फा कितना है, इस एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 24.5 into 10 raised to minus 6 है वो. Yes, 10 raised to minus 6. ओके, सो सीधा ये 10 raised to minus 6 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से कि 119 अपॉन 245. ओके, अभी 199 245 ये दोनों किसी नंबर से डिविजिबल है क्या, चेक करो. देखो 119 जो है वो कौन से टेबल में आता है, किसी एक टेबल का नाम बता सकते हो. Hmm. 17 sevens are, and unfortunately both of these are just prime numbers. Okay, so let us check whether this is divisible by 17 or not. 245 जो है वो 17 से divisible है क्या, चेक करो. 17 1 जा 17, बाकी बचा 7 और 75 हो गया, नहीं 7 से divisible है क्या, चेक करो. 7 3 जा 21, 3 बचा 35 हो गया. 7 5 जा 35. Yes, so we can just reduce both of them by 7 and get this 7 17 za, and here it will be 7 3 za and 7 5 za. So the ratio comes out to be 17 is to 35. Okay, so L naught upon L naught dash actually happens to be 17 upon 35. Okay, but already the difference between them is already given here. ये देखो यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है कि इनका डिफरेंस 1.5 है, तो वो अगर हम यहाँ बात यूज करेंगे तो देखो सिंस L naught माइनस L naught dash, अच्छा इससे पता चलता है कि L naught dash हैज टू बी ग्रेटर देन L naught. ओके, क्योंकि उनका रेशियो जो है वो 17 is to 35 है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट रैंडमली हमने ये यहाँ पे L naught माइनस L naught dash ऐसा ले लिया था. ठीक है,
और यहाँ पे भी LT माइनस LT डैश ले लिया था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इससे हमको सिर्फ ये मिल गया कि L नॉट अपॉन L नॉट डैश का रेशियो हमको मिल गया, और इस रेशियो को देख के हमको क्लियर ये पता चल रहा है कि L नॉट डैश मस्ट बी ग्रेटर देन L नॉट हियर, सो दैट मीन्स वी वांट टू राइट दैट L नॉट डैश माइनस L नॉट मस्ट बी इक्वल टू 1.5, so that we can just express L naught dash as L naught plus 1.5, correct? And if we just put this value here in this equation, then in the next step we can just be able to get this as, तो यहाँ पे L naught वैसे ही रहेगा, L naught upon L naught dash के बदले आ जाएगा L naught plus 1.5, okay? So this is L naught plus 1.5, and that is actually going to be equal to 17 upon 35. So now if we just cross multiply here, then we can be able to get this 35 L naught is equal to 17 times of L naught plus 15, okay? हाँ हाँ, okay sir. Yes, okay, so next step will be 35 L naught is equal to 17 L naught plus 17 into 15. How much it comes out to be? See, 17 into 15 can be worked out in a simple way. 17 can be written as 16 plus 1, okay? And 15 can be written as 16 minus 1. So that a plus b into a minus b का फॉर्मूला यूज करके वो मिलता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब वो बनेगा 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि हमको पता है 256 माइनस 1 किया तो वो बनेगा 255, okay? So that is the product of this 17 and 15, so that we can just directly put it as 255 here, and then we can just take this 17 L naught in that side, so as to get this 35 L naught minus 17 L naught, which actually happens to be 18 L naught, right? So 18 L naught is going to be 255, and then we can just try to find out this L naught finally. ठीक है, तो यहाँ से हम L naught find कर सकते हैं आराम से. Actually L naught will be equal to 255 upon 18, okay? This can be just worked out by using calculator or log table, we can say. So if we just use a log table or calculator, we can just 255 divided by 18, which actually comes out to be 14.16666 recurring. So that means 14.167 or 14.17 directly we can say. So L naught actually happens to be 14.17, and that is again in meter only, because already ये जो 1.5 दिया था वो मीटर में ही था. And once we get L naught, there is no problem in finding L naught dash here. तो L naught dash निकालना कौन सी बड़ी बात है? We can just try to find it out by using the difference, क्योंकि उनके बीच में का difference already दिया हुआ है. So L naught dash is actually going to be L naught plus 1.5. तो अगर इसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो 14.17 में अगर 1.5 ऐड कर दो तो उससे हमको मिलेगा 15.67, right? 15.67 meter. This will be actually the, okay, sorry, just wait. डेसिमल का ही गड़बड़ हुआ है क्या? No, it should be 14.17 only. It's correct. And the second length will be 15.67 actually. अच्छा, ये 15 नहीं 1.5 है. Shit, 1.5 है ना यहाँ पे. Yes, right. So इसकी वजह से यहाँ पे 25.5 आएगा actually. Yes, and then we can just divide this. तो यहाँ पे डिवाइड अगर करेंगे 25.5 को 18 से तो एक्चुअली हमको 14.17 नहीं 1.417 मिलेगा, करेक्ट. एंड
Yes, then we can just be able to find it out as okay. तो यहाँ पे फिर 1.417 में 1.5 अगर ऐड कर दो तो एक्चुअली वो 2.9 देखो 2.917 मीटर ये मिल जाएगा, which is already there in the answer. Okay, so this is going to be the correct option. Yes. Okay, let us stop this lecture here. 2 to 3 questions are just left out. We can just do them in the next lecture, no doubt. So thank you all of you. Bye bye.